कांचना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्या नमामि तम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्ण। Welcome to our Saturday class. We are on the Bhagavad Gita and we have completed up to 53rd verse of the second chapter. I thank all of you for coming today evening, despite your busy schedules and so many alternatives on a Saturday evening. Thank you. Hare Krishna. Also, I am very blessed to have His Grace Anandaman Prabhu, whose protection and guidance has helped me in my spiritual life for the last 23 years. Very grateful to him. So we are on the second chapter, which is a very interesting chapter of the Gita, because in the first chapter of Gita, Arjuna has offered many reasons for not doing his duty. And second chapter is where Krishna begins the answers. And second chapter is very special because in the second chapter, Krishna summarizes the entire Bhagavad Gita in the 72 shlokas of second chapter. So therefore, second chapter is called Contents of Gita Summarized. And the first 10 verses of the Gita, which we discussed earlier during our online classes, the main theme was that Arjuna comes to the realization that I cannot solve this problem with my own mind and intelligence. And therefore he takes full shelter of a spiritual authority. So the first 10 verses are when the theme is a time comes in our life when we can't solve problems on our own. So we need a spiritual authority. That is the first 10 shlokas. Then 11 to 30 is a very, very powerful section where Krishna gives the first knowledge of the Gita, that he tells us about our identity. He tells us how we are not the body, we are the soul. Just like car and the driver. Car does not go on its own. Car needs a driver to maneuver it. Similarly, this body is like a car, and the Atma, the real I, the real you, we are like the driver inside this car. So this was the 11 to 30. Then 31 to 38 was a section where Krishna tells Arjuna, one of the reasons he gave for not fighting the war was, I won't be happy if I fight this war. So Krishna gives very deep points in these 8 shlokas, 31 to 38, where he says, Arjuna, you want happiness? Happiness will come from proper execution of one's duty. If you don't do your duty, see, Krishna is talking about material happiness. He says, if you want material happiness, you have to do dharma. You can't avoid your dharma. And if you neglect your dharma, there will be downfall. There will be suffering. So, because Arjuna wanted to abandon the war. So Krishna is telling him, if you abandon the war, there will be unhappiness. Dukh hi dukh hoga, agar yuddha chhod denge. And then also Krishna gives a logic that you are Kshatriya. You will become infamous, badnami hogi. Your friends and all will not say that you are compassionate. They will think he dar gaya. He has left the battlefield. So therefore, heaven or earth, wherever you go, if you win the war, you'll get a lot of enjoyment here. If you die, you will go to heaven. So like that. So then we discussed last time in this class here, in the same venue, we discussed from 39 to 53, where we discussed, Krishna speaks a very interesting philosophy of Nishkama Karma Yoga. Means, karma karna hai, but Nishkam, matlab, don't be attached to the results, but do the duty. So, a very interesting science hai, which we discussed in detail last time, where Krishna is saying, see, Arjuna was saying, if I fight, I will get sinful reaction. Paap lagega, kisi ko maar rahe hain. So, anything we do, we get reaction. Right? Anything you do, you get reaction. Good, bad. Like if you eat bad food,
the next day morning you get reaction. And if you go and slap some stranger, you get immediate reaction. So reaction always comes. Like we were coming from Pune yesterday. So my driver was driving at 80 only and he was smiling. And some cars were going very fast ahead of him. And he was looking at them and laughing. I said, why are you laughing? He said, they will know when they go home. Because they are going to get fine, 2,000 rupees. Because there are cameras everywhere in the highway. And he was saying, I've already got 3 times. So I've learned my lesson. So for everything we do, there is reaction. Either good reaction, bad reaction, like that. So Arjuna was saying, if I fight the war, I'll get reaction. So this section is very important. Last time which we discussed. Buddhi yoga. Krishna says, apna buddhi ko lagao. Intelligence ko, you put your intelligence in remembering God. And then do your duty. Then what will happen is that duty will not give you reaction. If you remember the Lord, then you don't get reaction. And do it as a service to the Lord. Under the guidance of scriptures. So this was the last time section we discussed. So now, so basically, so far what is the conclusion of the Gita? That your activity will not determine bondage. Your consciousness determines the bondage. In what mood, what attitude you do your activity, that will give you reaction. So now, Krishna says, if you act according to this consciousness, remembering the Lord, then you will become liberated. Moksha mil jayega, mukti mil jayega. All suffering will go away. So now Arjuna is going to ask a very interesting questions, which is going to start from today, 54 to 72, the end of the chapter now. Arjuna wants now very practical. Abhi itna sab theory ho gaya na? Krishna has told theory. So now Arjuna has very practical questions from 54 onwards. He says, okay, Arjuna, Krishna, you are saying you have to have buddhi yoga, remember the Lord. Okay. I want to know from you, what are the symptoms of a person who is fixed in remembering you? जो बुद्धि योगा प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लक्षण क्या है? How does he walk? Arjuna says. How does he sit? So basically, this is a cryptic, It's like he's asking about how a person fixed in buddhi yoga, how is he like? वो कैसा व्यक्ति कैसा है? और इसका जो main theme है अभी हम लोग discuss करेंगे next few minutes and also maybe next time, is that one who is fixed in Krishna consciousness, one who is fixed in remembering the Lord or in soul, higher consciousness, he is beyond the disturbances of external material world. बाहर कुछ भी चलता रहेगा, वो अंदर से आत्माराम रहेगा, खुश रहेगा. He can experience transcendence even when he is in this body. आसपास बवंडर मचा हुआ है, तूफान चल रहा है, but वो खुश है. So this is the main theme. What is the main theme of this section? That if one who is fixed in Krishna consciousness, उसके symptoms अभी समझेंगे हम लोग. But the main theme is one who is fixed in Krishna consciousness is beyond the disturbance of this world. Is this clear? That is the main theme that we are going to discuss. See, I am not a Modi fan, but I'll just tell you an example. In India, giving example of Modi is very dangerous. Because either people love him or people hate him. वो neutral कोई नहीं देखा मुझे. In West, we can speak about Modi, no problem. So I am not a Modi Bhakta. I am a Krishna Bhakta. अभी मोदी का सत्ता है, वोट दिया किसी ने, अभी वो काम करेगा तो वोट देंगे अगली बार, नहीं तो नहीं देंगे. But I am just telling you one interesting point about Modi. जो भी उसका न्यूज में मैंने सुना है about his personal life, अगर वो सही है, I am assuming that it is true. If it is true, then he is a yogi. Then he is following this 54 to 72. Although I am in saffron and he is a Kshatriya, although I am supposed to be a sadhu and he is a Kshatriya, I consider him more spiritually advanced. If what is spoken about him is true, like what is spoken about him, like he says he sleeps only 3-4 hours, दिन भर काम करता है, 22 साल से पब्लिक ऑफिस में एक भी छुट्टी नहीं लिया. This is like we also need holiday. हम लोग भी भक्ति कर करके थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, घूमने जाते हैं. So how can he? That means he is internally fixed in something beyond the body. Again, I am assuming that
हाँ, सैलरी वो लेता है, वो क्या करता है, सैलरी पूरा डोनेशन में दे देता है, चैरिटी में दे देता है, और जो भी उसको गिफ्ट आता है उसको साल में एक बार ऑक्शन करता है। तो ये सब अगर सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मीडिया में जो बोलते हैं सही नहीं है, वो उनका थियरी होगा। अगर अभी देखो, ही इज नॉट हैविंग, मेन थिंग व्हाट अट्रैक्ट्स मी व्हिच आई फील इफ इट इज ट्रू, अभी कहीं भी न्यूज़पेपर में पढ़ा नहीं उसका कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं है, कोई स्कैंडल भी नहीं है। अगर एक्चुअली गर्लफ्रेंड नहीं है मतलब वो योगी ही होगा, क्योंकि वो पोजीशन में इतना जो गाली खाता है ना, इफ यू आर क्रिटिसाइज्ड सो मच, देन यू नीड अ कंपेनियन. Like earlier time, Kshatriyas would not only have a wife, they would have many wives, they would also go to prostitutes because they had to release that passion and that energy, negative energy. And if you get lot of praise, Modi gets praise also. Usko digest karne ke liye bhi you need a companion. You need some. So he doesn't have a wife. Matlab he has some, but he doesn't. I think they never been together. ऐसा कुछ है, right? So if he is not having a woman in his life, and also, you know, same gender, is like sex-free life, if that is his life. If he sleeps only 3-4 hours and he says that मैं सुबह ऐसे सो जाता हूँ, नींद लग जाता है. अरे कैसे नींद लगेगा, लोग इतना गाली दे रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा issues है. He says as soon as I lie on the bed, I immediately get sleep. So if that is true, then he is a yogi. Because हम लोगों के लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, but still we don't get sleep immediately. Compared to him, we don't have any anxiety. And still we don't get sleep. So this guy, how can he? I always wonder, how can he sleep so peacefully? How can he not have a girlfriend? And how can he not take holiday? And how can he only sleep 3-4 hours? And how can he not be affected? So then I feel 54 to 72. Whenever I read, मुझे मोदी याद आता है. Unless somebody tells me all that you have heard about him is wrong, I would like to believe that he is practicing. He is like Arjuna. What Krishna is telling Arjuna to be, what Krishna is telling Arjuna you should be, Modi is showing it. So if you don't like Modi, please forgive me for this example. You can put your own favorite politician there. केजरीवाल, राहुल गांधी, जो भी आपके, ममता बनर्जी, नहीं, आपके सबके अपने अपने चॉइस है ना, तो ऑफेंड नहीं करना. तो मैंने अपना बता दिया. So let's go with 54 verse today. ठीक है? So what is the main theme? Once again, who will say what is the main theme of this section? Modi, na? What is the main theme? One who is fixed in Krishna consciousness, what will happen? He is not affected by external disturbances. Even if he is disturbed by external disturbances, that is not affecting his performance, his duty in this material world. बहुत high level का भी knowledge देने वाले हैं, because Arjuna wants to know practical symptoms. So let us see what are the practical things that Arjuna asks and what are the symptoms that Krishna will reveal. Is that okay? Text number 54. Arjuna Vacha. All of you have access to the verses. You'll have to repeat, okay? Sthita pragyasya ka bhasha samadhistasya keshava sthita dirkim prabhaseta kimasita vrajeta kim. Who will read the translation today? Yes, please. Arjuna said, "O Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence? How does he speak? And what is his language? How does he sit? And how does he walk?" Arjuna is asking the characteristics of one who has realized and has become fixed in Bhakti Yoga. Basically, he is asking 4 things. What are the general symptoms of such a person? Secondly, how does he speak? Third, how does he sit still? How does he sit matlab? How does he restrain himself? अपने आप को control कैसे करता है? How does he sit? And how does he walk? तो cryptic है. How does he walk matlab? How does he engage his senses? So like that he is asking questions. Now let us see how Krishna will answer this. Okay? So first he will give general symptoms of a self-realized soul. जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है
उसके जो जनरल लक्षण है वो अभी आपको सुनाई देगा। टेक्स्ट नंबर 55, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। श्री भगवान वाच प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। The Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental compulsion, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. So main symptom, उसका general symptom क्या है? He renounces all desires for sense gratification. अपने इच्छा के लिए जो इच्छा desire है वो छोड़ देता है. So he doesn't have a family. If he's a politician, he won't have his own family, he will not keep money for his family. It will not be a family-based political party, and he will not be going to foreign countries for holiday, partying. This is a basic, practical application of this symptom. That he will renounce desire for sense. मेरा अपना enjoyment, मजा के लिए कुछ नहीं करेगा. Basically, then you will think, but how will he become happy? उसका pleasure कहाँ से आ रहा है? Pleasure लगता है ना सबको. So it is saying, the third line of this shloka, आत्मन एवात मनः तुष्ट. तुष्ट मतलब satisfaction. आत्मन एवात्मना, अपने अंदर से उसको आनंद आ रहा है. You are understanding? मतलब he doesn't need the दुनिया को, उसको जरूरत नहीं है खुशी के लिए. Our difference between such a yogi and us is that we need externally somebody to make us happy. Please understand the psychology. If you are somebody who needs an external person to make you happy, then you'll always be miserable, because there is nobody in this world who can make you happy. And secondly, even if you serve someone thinking that that person will make me happy, that person will always disappoint you, because that person's expectations will be more than what you are giving him or her. Whereas if you are internally satisfied by connecting to Lord, then you have got enough happiness. Then when you are interacting with another human being, you are only giving. And when you are giving, that person thinks, Arey, why is he giving me? He is so selfless. So that person becomes so happy, then he starts serving you. And because you never expected it, and when you get something you don't expect, you become really happy. So like that way, both of you are happy. That is why we tell our grahasthas, get attached to Krishna, because then if you take happiness from Krishna, and then when you are talking to your wife or your husband, then you are not putting pressure on them to make you happy, because your source of happiness is the Lord. And then when you give them selflessly, that person, अगर उसमें इंसानियत है, उसको समझेगा, अरे ये तो बड़े प्यार से मेरा सेवा कर रहा है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, उसको हैप्पीनेस तो भगवान से ले रहा है. Then that person also serves. See, we all need pleasure. Vedanta Sutra says, Anando Mayo Bhyasat. Everybody is looking for Ananda. अरे आप देखोगे एक चींटी पे भागता है खाना लेने के लिए, you know, हाथी भी जंगल में, उसको भी चाहिए. Everybody is looking for pleasure. Everybody. And when we come in relationship, we are looking for pleasure. And we are told, serve the other person. See, everybody is wanting happiness. But when two people come together, if you are also wanting happiness, the other person also wants happiness, then there will be conflict. क्योंकि you are आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारा बोले काम, मेरी खुशी मतलब काम है वो. कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम. When we have a higher consciousness, that is prem. So when there is lust, I want enjoyment from you and you want enjoyment from me, then there somewhere कहीं ना कहीं conflict होगा. But you will say, but I want happiness. You are saying service करो service, but service नहीं होता है.
अभी किसी को बोलेंगे आप प्रभातम सर्विंग करो, वो करेगा क्योंकि उसको मालूम है एंड में उसको भी मिलेगा। हमारे इस्कॉन में जब प्रभातम सर्विंग करते हैं 4-4, 5-5 घंटा करते हैं लोग, और वो क्या करते हैं सर्विंग करते समय, और जब खत्म होने को आता है ना अपना 2-3 प्लेट बना के रखते हैं, प्रैक्टिकल। और हमारे फेस्टिवल में हम लोग सेवा करते हैं 4-4 घंटा सर्विंग करना पड़ता है। वो 4 घंटा सर्विंग शुरू करने के पहले हम लोगों को बिठा के पहले गरम गरम खिलाया जाता है, ताकि फिर आप बड़े स्माइल से सर्विंग कर सकते। यू कांट सर्व इफ यू डोंट गेट। तो आपके रिलेशनशिप्स में आपको सब फैमिली काउंसलर्स बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे यू शुड सर्व इन अ रिलेशनशिप, सर्व। तो प्रैक्टिकली ये फूलिश पॉइंट है, क्योंकि हाउ मच कैन यू सर्व इन द फैमिली इफ यू आर नॉट गेटिंग लव, राइट? सर्विस बट आपको भी खुशी चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, आपको भी चाहिए तो आप जो अपना प्रसाद है ना कृष्ण से लो और इधर खिलाओ लोगों। दैट इज द साइंस ऑफ भक्ति योगा। टेक योर कोटा ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम कृष्णा एंड टू दिस वर्ल्ड यू गिव। दैट वे यू विल बी पीसफुल बिकॉज यू डोंट हैव एक्सपेक्टेशन, एंड दे विल बी हैप्पी बिकॉज दे आर सीइंग सेल्फलेस सेवा मिल रहा है, दे विल आल्सो गिव। एंड इफ दे डिसअपॉइंट यू विल मूव ऑन। Basically, you will not be attached to this world. That is the main point here. आत्मनेवात्मना तुष्टा, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं देख रहा है, is inside only is happy. Very important. There is two very, आज के दुनिया में क्या हो गया है, pleasure has become, people are thinking pleasure is equal to happiness. Pleasure और happiness दोनों अलग है, by the way. Please know this. This is the main first teaching of the Gita. Pleasure is different from, what is pleasure? Can anyone explain what is the difference between pleasure and happiness? Pleasure means senses को affect करता है, आपका ears, eyes, nose, touch, body senses को जो affect करता है, that is pleasure. Okay? Happiness is something which is deeper. गुलाब जामुन खाया आपने, आपको अच्छा लगा, that is pleasure. But when you make gulab jamun and feed someone else, then the happiness you experience. Have you seen sometimes those who cook and feed, they are more happy. कितने बार देखा हमारे मंदिर में कुछ डिवोटीज हमेशा सर्विंग करते हैं। एक हमारा सूर्य कृष्णा है ब्रह्मचारी, वो तब से ज्वाइन किया 16 साल से, सबसे पहले उठ जाता है 3 बजे सुबह और रात को सबसे लास्ट सोता है और दिन भर सेवा करता है, प्रभातम सर्विंग करेगा, ड्यूटी वर्शिप करेगा। ऐसा बच्चा नहीं है वो, 45 साल का हो गया, दिन भर सेवा करता है। तो मैं उसको बोलता हूँ तुम्हारा नाम सूर्य कृष्ण इसलिए है क्योंकि तुम सूर्योदय के पहले उठता है और सूर्यास्त के बाद तक भी सेवा करता रहता है तुम। सूर्य कृष्ण, he is only serving and I realize he's doing it because he's actually getting happiness. कोई ऐसा टाइम पास के लिए उसके सर पे बंदूक नहीं रखा है। So and when we eat prasad we are happy, right? अच्छा लगता है खाने को। But if you compare enjoyment of the senses with giving pleasure to others, serving. So service में what you experience, that is happiness. Pleasure is also addictive, by the way. Happiness is not addictive. Happiness is संतुष्टि. Pleasure will give pain. Pleasure में आप जितना भी engage करेंगे ना pleasure, उसका डबल पेन मिलता है। x यूनिट ऑफ प्लेजर इज इक्वल टू 2x यूनिट ऑफ पेन। हमको जब हम प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं हमको लगता है कि अभी वी डोंट थिंक ऑफ द आगे का पेन, जब वो आता है इंटरेस्ट के साथ आता है, हमें लगता है बस ओनली प्लेजर। ऐसा नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में एनी प्लेजर, देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन। हमको लगता है कि कॉइन टॉस किया तो हेड्स आएगा, प्लेजर आएगा, पेन भी आएगा। But we don't like that pain. We are like, only there was a movie when I was young. वो मूवी में वो कॉइन रहता है हीरो के पास, उसमें हमेशा हेड्स ही आता है, कोई एक ही उसमें टेल्स आता ही नहीं। वो सिर्फ मूवी में हो सकता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में दोनों रहेगा, हेड्स एंड टेल्स। So pleasure is different from happiness. So the Krishna is saying the self-realized soul का main symptom है is pleasure is not from senses. He is deriving internal pleasure which is happiness. And the more pleasure you experience, the less happy you become. Because pleasure is about the senses. Happiness is something deeper. So if you want to be
If you want to be really happy, then you have to engage less in the pleasure of this world. तो आप बोलोगे दुनिया में प्लेजर नहीं है क्या? है, पर उसका जो बहुत महंगा प्लेजर है, उसका जो रिएक्शन आता है, जैसे हमारे कृष्णानंद प्रभु एग्जांपल देते हैं, अगर कोई रसगुल्ला दिखाया, रसगुल्ला बहुत टेस्टी रहता है ना, अगर किसी ने कहा ये रसगुल्ला आप खरीदो हमसे, पर ये 1 लाख रुपए का है एक रसगुल्ला, तो आप क्या बोलोगे? अरे बेकार है। वो बेकार नहीं है, वो टेस्टी है, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड इट इज 1 लाख रुपीज, यू विल नॉट गो फॉर इट। सो ये जो प्लेजर हम एक्सपीरियंस करते हैं इस दुनिया में, उसमें प्लेजर है, नहीं तो दुनिया पागल नहीं, उसके पीछे सब भाग रहे हैं, कुछ तो मिलता होगा ना, इसलिए तो जा रहे हैं, बट दे डोंट नो दैट उसका 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। The greatest pleasure you can experience in this material world, the highest pleasure, it is fleeting. It is over in a few minutes. It's not even enjoyable. And then you have to pay 1 lakh rupees. Then you realize, oh, it's not worth it. So Vedic scriptures are very scientific. Dharma, artha, kama, moksha. चारों दिया है. तो काम, अगर धर्म का पालन कर रहे हैं, तो धर्म के पालन करते हुए अर्थ कमाओ, और उस अर्थ से जब आप काम भोग करते हो, एंजॉय करते हो, धर्म है, धर्म इज देयर, सो देन व्हेन यू एंजॉय, यू रियलाइज दैट ये सब फ्रस्ट्रेटिंग है, बेकार है, एंड देन यू गो फॉर मोक्ष। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टीचिंग अस दैट दिस प्लेजर इज वर्थलेस, गो फॉर डीपर हैप्पीनेस। So this is clear. First symptom Krishna has answered. Now Krishna will speak in 56 and 57. How does this person speak? He neither praises nor condemns the mundane duality of this world. जो actually योगी है ना, वो फालतू में किसी को प्रेज नहीं करेगा, फालतू में किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, because he has nothing to do with the world. So let us see 56, please. 56 and 57 we will chant. Please repeat after me. दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागा भयक्रोधा स्थितधीर्मुनिरुच्यते। One who is not disturbed in mind, even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called the stage of steady mind. Verse 57. यह सर्वत्रानभीष्णेः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. See, main point is this person, he is neither praising nor condemning the duality of this mundane good and evil. ये अच्छा है, ये बुरा है. Criticize, he doesn't get carried away by this. And the main fundamental symptom of such a person is revealed in these verses is satisfaction. If somebody is fixed in understanding his constitutional position, he will be satisfied. He will be actually happy. Okay, psychology में जो science, ये लोगों ने बहुत hundreds of years they are studying this concept of happiness. So what they have come to conclusion, very interesting. I'm not saying I fully agree with that, but you can think about it. आपके life में आप इसको समझ सकते हैं. Martin Seligman, he is one of the most famous psychologists of the 20th century. He gave a concept. He said happiness, which everybody is wanting, it is composed of 3 components. अगर ये तीनों आपके लाइफ में हैं, तो then you are happy. Now you ask yourself, are you happy? If you want to know whether you are happy, you just ask if these 3 components are there. First is pleasure. Now, pleasure we know is bad for long run.
But practically speaking, 99.9% of people want pleasure. Even the nice sadhus, they want nice prasad. अच्छा खाना मिलता है वो खुश है. तो प्लेजर एक दुनिया का एक नियम है, बट उसमें क्या है, प्लेजर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दोज ऑफ योर स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, you will know there is a concept called diminishing marginal utility. You take the first sweet, you like it. Second one, you really like it. Third one, you want more. But after fifth one, you don't want. And then if you're forced to eat the eighth or ninth one, you will puke. Right? That means the satisfaction derived from increased consumption of that product will give you reduced happiness. It will reduce the happiness. So therefore, pleasure is just one small unit of happiness, and it may be like one unit. But we need a double unit of the second component of happiness, which is engagement, activity. जब हम कुछ सेवा करते हैं, कुछ काम करते हैं, अगर ठीक है आपको सेवा नहीं करना है, कोई बात नहीं. But compared to pleasure, engagement gives more happiness. Like for example, I'll tell you an example. अभी आप क्रिकेट देख रहे हो टीवी पे, कौन है इंडिया का अभी बेस्ट बैट्समैन? केएल राहुल. तो आपने केएल राहुल को देखा, सेंचुरी मार रहा है. हार्दिक पांड्या सेंचुरी मार रहा है, आप अच्छा लग रहा है मैच देख के, आपके सेंसेस को प्लेजर मिला, राइट? अभी आप बैट लेके नीचे खेलने जाओ और आपने 1 घंटा खेला, देन यू कंपेयर व्हाट मेड यू मोर हैप्पी. खेलने में ज्यादा खुशी मिला ना. पर क्या आप हार्दिक पांड्या जैसे खेलते हो, केएल राहुल जैसा खेलते हो? But you are more happy yourself playing, although you are not as good as the batsman you see on the TV, because you are engaging. That engagement gives more happiness. भी गाना कितना अच्छे, कोई अरिजीत सिंह का गाना सुना या कोई पाकिस्तानी गजल सिंगर्स का, मजा आ गया. But when you yourself sing, लोग बाथरूम में क्यों गाते हैं? When you sing, when you compose music and you sing, you become more happy, although you may not sing like Kishore Kumar, Mohammed Rafi. So the point is, pleasure is just one unit of happiness. Engagement gives more happiness. So that's why when people are depressed, we tell them, engage, do something. Go and serve prasad, go to an orphanage, कुछ करो, jogging करो. कितने सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं आप डिप्रेस्ड है, वॉकिंग में जाओ, वॉकिंग करो, सुबह उठो, सूरज के सामने वॉकिंग करो. एंगेजमेंट इज नीडेड. बट देयर इज अ थर्ड कंपोनेंट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज व्हाट? प्लेजर. सेकंड, एंगेजमेंट. थर्ड इज मीनिंग, पर्पस, something deeper than the engagement and pleasure is all about yourself only, no? मेरा प्लेजर, एंगेजमेंट भी मैं खुद भाग रहा हूँ. इट्स ऑल अबाउट मी. प्लेजर एंड एंगेजमेंट इज ऑल अबाउट मी. बट मीनिंग मतलब मेरे ऊपर भी कुछ है, उससे कनेक्ट करना. लाइक फॉर अस इट इज कृष्णा. फॉर अ नेशनलिस्ट इट कुड बी द कंट्री. फॉर समबडी इट कुड बी अ लार्जर फैमिली और अ कम्युनिटी. समथिंग बियॉन्ड योरसेल्फ, दैट इज मीनिंग. और इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं. ये हम लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे. जैसे मार्टिन सेलिगमैन ने एक्सपेरिमेंट किया. वो कॉलेज में गया, साइकोलॉजी प्रोफेसर था, तो उसने स्टूडेंट्स को बोला, टुडे वी विल नॉट हैव क्लास, ऑल ऑफ अस विल गो फॉर अ मूवी. स्टूडेंट्स सेड वाओ, हरी बोल. दे वर वेरी हैप्पी. तो वो लोग गए, मूवी देख के आए. सो दे केम टू द क्लास. फॉर देन दैट प्रोफेसर ही गेव देम अ शीट, एक पेपर. Write the happiness का आपका कितना, how much you felt in a score of 1 to 10. सबने रैंकिंग दिया. They were very happy. So next day, again he came to the class. He said, today also we will not have class. And students said, movie? He said, no, today we will go to one. He took them to one orphanage, one charity home, and they all served there. 1 घंटा सेवा किया. Then they came back to class. So then he said, rank your happiness. So they ranked, some ranking they gave. So ho gaya. So now at that time, you may think most people must have preferred movie as giving them more happiness. They would have preferred to go for movie. But the story doesn't end there. Next day he continued the class. 6 महीना class chala. After 6 months, he told the same class. He gave them one sheet. He said, remember 6 months ago we went for a movie.
So how happy are you feeling now because of that when you remember that movie experience? Rank it. सब लोग ने ranking दिया. Then he took that. Then he gave them another sheet. He said, remember 6 months ago we went to that charity place and you served orphanage. So how happy are you feeling now remembering that? Rank it. And this was 100% people ranked this as higher than the movie experience. Over a period of time, pleasure है ना, pleasure क्या है, तुरंत अपने senses को titillate करता है, but meaning goes deeper. In the long run, a meaningful life centered on service, contribution, connection to something higher than yourself gives you much more happiness. So therefore, pleasure and engagement, pleasure is not, is maybe if you say 1x, engagement has to be 2x, and meaning is like 10x. It is the highest component of happiness. For those who lead a meaningful life, you ask yourself, if you think somebody is really happy, you will see that he has some purpose, something more than his own ahara, nidra, bhaya, maithun. Eating, sleeping, sex life or defending. ये चार से ऊपर कुछ उसका रहेगा, नहीं तो he cannot be happy. So this is, basically the point is, he doesn't look for pleasure from the material world. Because he is experiencing happiness of Krishna consciousness within. He is experiencing the connection with the Lord within. So therefore, he is beyond all this rejection and acceptance of this world. So now, Krishna will speak in the next 5-6 verses, how this person who is self-realized, how he sits. कैसे बैठता है वो? पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में. How he sits मतलब how he restrains himself, how he controls his senses. So now Krishna will reveal that a self-realized yogi, which Krishna wants Arjuna to become, he says he is a person who can perfectly withdraw his senses from the sense objects. अगर sense object, अगर phone है आपका और आपने decide किया कि अभी 2 घंटा मैं concentration के साथ पढ़ाई करने वाला हूँ और आपने phone रखा है और phone बज रहा है, म्यूजिक आ रहा है, रिंगटोन कुछ भी हो रहा है, but you are able to easily perfectly withdraw your senses from that object. That is how he sits, that is how he restrains himself. So let us see 58. Krishna gives a beautiful example to explain this. Please repeat. Yada samharate chayam kurmonganiva sarvasha इंद्रियानिन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. One who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws his lips within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. What is the example he is giving? Kurmonganiva. Tortoise withdraws its senses. तो अगर सेवा है तो ये जो व्यक्ति है he will engage his senses. सेवा नहीं है तो withdraws. That means he is in full control of his senses. He is a go swami. Go मतलब senses. स्वामी मतलब उसे कंट्रोल करता है. And we are called as godas. हम अपने senses के servant हैं. तो आप बोलोगे अर्जुना में आस्क, अरे ऐसे कैसे कर सकता है कोई? ऐसे कंट्रोल करना, अभी फोन बजता भी नहीं है, फोन ऐसे रखा है तो भी हम उठाते हैं उसको देखने के लिए. दैट मीन्स मतलब फोन नहीं भी बजता तो हम उठाते हैं. मतलब इट इज सच अ पावरफुल सेंस ऑब्जेक्ट. हाउ कैन समबडी नॉट बी, हाउ कैन समबडी विड्रॉ हिज सेंसेस? हाउ इज इट पॉसिबल? सो कृष्णा विल नाउ रिवील इन द नेक्स्ट वर्स द सीक्रेट हाउ ही इज एबल टू डू इट. Let's see what 59th verse says. Vishaya vinivartante niraharasya dehina
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. But ceasing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Higher taste. Rasavarjam rasopyasya param drishtva. Something higher you experience, then lower thing you give up. अगर कोई रास्ते में भिखारी है, बच्चा कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ में है, ऐसा सड़ा हुआ चपाती पाव खाता है, पर सडनली उसको अगर गरम गरम बटर पाइनएप्पल हलवा मिल गया, पराठा सब्जी मिल गया और 3-4 दिन तक मिला उसको और गारंटी आगे भी मिलेगा, तो फिर उसको कोई लाके देगा वो पाव, वो सड़ा हुआ रोटी खाएगा वो. क्यों? क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया. So most people in this world, when we see they are addicted to lusty activities, we think this must be the highest pleasure. No, engagement in illicit sex is not an indication that sex life is the highest pleasure. It is simply an indication that they don't have experience of something higher. So they go back to that. They are like that beggar child who is not having something higher. If somebody gets that, he is able to peacefully live without it. मतलब कुछ तो मिल रहा है उसको, नहीं तो ऐसे नहीं रहेगा. See, when we were small, we used to have this game. I don't know, nowadays children may not have this game. Nowadays everybody is on smartphone. We used to play game of collecting cigarette packet covers. तो Wills रहेगा, वो now I forget also, classic cigarette packet रहेगा, उसका पैकेट का पॉइंट्स रहता था. सबसे लोवेस्ट पॉइंट्स, लाइक नाइस ब्रांड सिगरेट का रहेगा ना, Marlboro, उसका 4 पॉइंट रहता. So you have to collect all the young boys. We have to collect those covers, cigarette packet covers. तो 4 points. Then सबसे कम पॉइंट 4 अंक का रहता था, 1 पॉइंट. And then 0.5 was the lowest point was for Ganesh Chap बीड़ी का पैकेट, उसका कवर. So like that we used to collect those packets. तो हम लोग वो पान पट्टी की दुकान में बाहर खड़े रहते थे. तो वो कोई आफ्टर द सेलिंग वो सिगरेट बेचने के बाद वो कवर खाली रहता था ना, वो फेंक देते. तो फेंकता था, हम लोग भागते थे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट. और जो फेंकता था हम लोग सोचते थे क्या पागल है, फेंक रहा है इसको, 4 पॉइंट फेंक रहा है. We were so absorbed in that game, collecting cigarette packet cover, and the grown-up people were laughing at us. क्या ये लोग cigarette packet cover के लिए इतना? That was the game. Now, when we see that game, will I play that game? Now we are playing higher games, bigger, better games, right? So similarly, when we are spiritually children, when we are spiritually not evolved, we are attracted by things which we will find it shocking when we grow up in spiritually. Like right now, we may be thinking this is the greatest pleasure, but that is because we are like children. So therefore, Krishna consciousness is guaranteeing the 9th chapter. आगे आएगा. Krishna will say that Bhagavad Gita will give you, Krishna consciousness will give you Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha-vagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam. Pratyaksha-vagamam मतलब भक्ति का जो प्रोसेस है, Pratyaksha-vagamam, directly experienceable. It is not abstract theory. Actually आप सेवा करोगे, actually भक्ति करोगे तो आपको खुशी मिलेगा. एक बॉम्बे के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी हमारे अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर दीपक, साइकेट्रिस्ट है बहुत बड़े, लंदन में थे बहुत साल. जब वो कॉलेज में स्टूडेंट थे, हम लोग जाते थे उनके कॉलेज में, गौरंगपुर के साथ में जाता था. एंड ही वाज अ टॉपर. इवन व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, हिज आर्टिकल्स यूज्ड टू बी पब्लिश्ड इन इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन के जर्नल्स में. ही इज अ जीनियस साइकेट्रिस्ट, सुपर इंटेलिजेंट फेलो. तो उनके गौरंगपुर के क्लास में, हर क्लास में चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता था. वो आधा घंटा तो उसके साथ ही डिबेट में जाता था. तो वन डे इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. वो क्लास में एज यूजुअल हाथ उठाया, तो गौरंगपुर ने कहा 1 मिनट, आप ना एक छोटा सेवा करेंगे क्या? हमारा बरसाना आई कैंप होता है. एवरी ईयर अवर डिवोटीज गो टू उत्तर प्रदेश, वहां पे गांव में आई कैंप करते हैं, कैटरैक्ट ऑपरेशन की सेवा करते हैं.
1 महीना, तो आप कम से कम 15 दिन के लिए जाके उधर सेवा करो, वेलफेयर सेवा, सोशल सर्विस करो थोड़ा। तो उसने एग्री किया, देन ही वेंट। सो आफ्टर दैट बरसाना आई कैन बी केम बैक एंड अगेन नॉर्मल जो वीकली क्लास में गौरव प्रभु क्लास के बाद एनी क्वेश्चंस, और वो ऐसे ही बैठा है। गौरव प्रभु की कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन आंसर हो। वो सेवा करके इतना आनंद मिला उसको, तो उसको लगा मैं क्या डिबेट कर रहा हूँ, क्या फाइट कर रहा हूँ। So my point is that when we get a higher taste, the what we are looking for in the lower pleasures. See, right now many of us can't understand Krishna consciousness में क्या higher pleasure है. But once we experience higher pleasure, then when we get the lower pleasure, we may engage in the lower pleasure, but we'll get frustrated. क्योंकि वो मिल रहा है ना, और उसका hankering होगा. See, there are many devotees, I'll tell you. Some secret I'll tell you. There are devotees, sincere devotees. भक्ति सिंसियर भी किया और कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट भी मिला। बाद में माइंड कुछ समय बाद बिविल्डर हो गया एंड दे वेंट बैक टू द पास्ट लाइफ व्हिच दे वर एंगेजिंग इन। some of them slipped from the standard and when they engage in that they become frustrated. they are not happy. आप समझ रहे हो? जो पहले करते थे they used to go to a liquor bar or a discotheque or engage in drugs, something like that, and they became devotees, chanting, blissful, bhakti कर रहे हैं, and कुछ समय बाद कुछ तो हो गया, mind bewilder हो गया, कुछ अपराध किया, reaction मिला, कुछ हो गया, then again they go back to material life, and when they engage in sense gratification, it's not that they are happy, मतलब वो बेचारे miserable रहेंगे, they are trapped. Once you get भक्ति का एक बार चस्का लग गया आपको, बाद में आपने सेंस ग्रेटिफिकेशन किया भी तो आपको खुशी नहीं मिलेगा. कमिंग टू भक्ति इज लाइक ज्वाइनिंग माफिया. आप एक माफिया अंडरवर्ल्ड के गैंग में घुस गए तो आपने कुछ समय बाद बोला मैं छोड़ देता हूँ, छोड़ने देंगे आपको? Why can't leave? Because you know too much. तो भक्ति में भी ऐसी है, एक बार आप अंदर आ गए, भक्ति का एक्सपीरियंस कर लिया, फिर आप गए तो कृष्णा बोलते हैं तो आप, मैं तो सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन हूँ, बियॉन्ड वर्ल्ड डॉन, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड का. अभी यू आर ट्रैप्ड. सो देयर आर डिवोटीज, आई टेल यू, देयर आर डिवोटीज हु हैव एक्सप्रेस्ड दिस, दैट they have sincerely, subconsciously they may have desire for sense gratification. They may be doing bhakti, practicing nicely, and Krishna fulfills the desire. I tell you, Krishna will fulfill all your deepest desires. Material desires अगर है, भगवान fulfill करते हैं. So you may think, wow, Prabhu, I'm so lucky. आज प्रभु जी ने क्लास में बोल दिया कि Krishna will fulfill all my deepest desires. I have this desire, I have that desire. Whatever desires you have, Krishna will fulfill. But you know what? Krishna's special mercy क्या है? You can know that Krishna has given you special mercy not when he fulfills your innermost desire, but after you fulfill that desire, Krishna will give you the realization. क्या मांगा मैंने यार, छे, क्या लिया मैंने कृष्णा से, क्यों मांगा ये, छे, this was not worth it. I'm such a fool. इसके लिए मैंने भगवान से इतना भक्ति किया. Then that person is hankering to come back to Krishna. कृष्णा नहीं, प्लीज एक और चांस दे दो कृष्णा, बस अभी कभी नहीं, I'll never leave you again. वो हायर टेस्ट मिल गया ना, वो फंस गया. कितने स्टोरीज है हमारे डिवोटीज के, हजारों स्टोरीज है. So therefore, that means this is higher. See how it works. Science कैसा है? हमारे अकिंचन कृष्णा प्रभु है हमारे मंदिर में, उसकी मदर बैंक में मैनेजर. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. तो हम लोग एक घर पे गए थे प्रसाद के लिए, तो मैंने बोला आंटी, मतलब वेरी यंग जब हम लोग ज्वाइन किए थे, तो शी यूज्ड टू ट्रैवल इन लोकल ट्रेन पीक आवर्स में. ऑल्दो शी यूज्ड टू ट्रैवल इन द लेडीज कंपार्टमेंट फर्स्ट क्लास, बट स्टिल इट वाज क्राउडेड. तो आई टोल्ड हर, मतलब आंटी आप इधर से आ रहे हो बोरीवली से चर्च गेट, कितना गंदा होता होगा ना लोकल ट्रेन सुबह शाम को पीक आवर में. नहीं, इट्स कंफर्टेबल, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैंने कहा आंटी आप तो लेक्चर में बोलते रहते हैं लोकल ट्रेन हॉरिबल है, वो नहीं, इट्स वेरी कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो देन आई थॉट हाँ सही है, मतलब शी मस्ट बी नॉट अफेक्टेड. तो बाद में क्या हुआ, कृष्ण प्रभु टोल्ड दैट हिज मदर गॉट ट्रांसफर्ड. तो उनको असम में उनके बैंक का कोई ब्रांच में शी वाज मेड मैनेजर, एंड उनका जो ऑफिस था वो उनके घर 2 साल के लिए भेजा था उनको.
for some project. So the residence she was given was a 15 minutes walk from the bank, and in that walk there was all greenery, पूरा pond था, trees था, और पूरा scenic जगह पे वो रह रही थी. तो 2 साल तक उधर जॉब किया. वो फिर वापस आई बॉम्बे. Then she resumed her चर्चगेट में जो जॉब था. So then we went again for प्रसाद. तो जब हम खा रहे थे तो मैंने ऐसे पूछा, आंटी कैसा था आपका आसाम में? अरे बहुत अच्छा था. अरे क्या बॉम्बे में कितना बेकार है, लोकल ट्रेन में जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है. तो धने फटे, आंटी पर आपने तो बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हम आए थे 400 पे. Then she also stopped. She said, yeah, that time I didn't experience this. So right now we may say, क्या हरे कृष्णा वाले बोलते रहते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ, डिफेंडिंग बेकार है, भक्ति करो, पागल रहे हो. मेरा लाइफ तो कंफर्टेबल है यार. मैं तो सुबह उठ के न्यूज देखता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज, दोपहर को ब्रेकिंग न्यूज, शाम को और सब वेब सीरीज देखता रहता हूँ, और क्या है, गाना सुनता हूँ. आई बूज, आई पार्टी, आई एम ओके, कूल, लाइफ इज कूल मैन. हरे कृष्णा सर थोड़ा ऐसा हम सोचते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव, वी आर लाइक इन दैट लोकल ट्रेन. बट एक बार आपको ये टेस्ट मिल गया, प्यार से किसी का सेवा करना, उसके चेहरे में खुशी देखना. मालूम है, मेनी टाइम्स ना, यू जस्ट डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, यू जस्ट वांट हिम टू फील हैप्पी, बिकॉज उसके खुशी में बहुत आशीर्वाद मिलता है. जैसे हमारे एक बुजुर्ग डिवोटी है, मथुरा मोहन प्रभु, बहुत साल से मुझे बोलते थे मुझे भजन करना है. वो एनीवे सुबह 2 बजे उठते, सुबह 2 बजे उठ के 12 बजे तक दोपहर को माला करते, फिर स्नान करके फिर थोड़ा 15 मिनट रेस्ट करते हैं, फिर भागवतम पढ़ते हैं, फिर माला करते हैं. अभी 70 इयर्स होने को आ गए. तो बोले अभी मैं बस अपना अंतिम दिन वृंदावन में बिताना है, भगवान का स्मरण करना. तो हम लोगों ने एक लड़के को भेजा उनके साथ, वृंदावन में उनको सेटल कराया. अभी उधर ही रह के भजन करते, शांति से, खुशी से रहते. तो ये जो लड़का वापस आया, असिस्टेंट, उसको आप देखते हैं ना, ऐसा चेहरा खिला हुआ, आई कैन सी द डिफरेंस एंड आई कैन इजीली सी क्या हो गया उसको. वो प्रभु जी का इतना आशीर्वाद मिला, बिकॉज वो प्रभु जी का सामान लेके गया, उनका उधर सेवा किया, 1 हफ्ता उनको सेटल कराया सब. सो दैट प्रभु जी gave him elderly devotee, he is the age of his father, he is 40 years older to this boy. तो इतना blessings लेके आया. मैंने बोला तुमको क्या मिला? He is not able to explain what he has got from that service, but I can see he has changed. इतना आशीर्वाद मिलता है जब हम सेवा करते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, और वो खुशी मिलने के बाद then when we engage in this sense gratification, then we feel अरे क्या यार, ये तो लोकल ट्रेन में जाना पड़ रहा है. इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था डिवोटीज के साथ, सेवा करना, प्रसाद खाना, प्रसाद खिलाना. So therefore we need to somehow ensure that we get higher taste. तो अभी आप बोलोगे प्रभु जी मुझे ना आप लोगों के जैसा वो कीर्तन में डांस करने को जमता नहीं. No problem. When I joined ISKCON, I never liked to dance. I find it very uncomfortable because I come from South Indian Brahmin family. वहाँ पे dancing was considered low class. और कीर्तन में ना, हमारे उधर कीर्तन में केवल करताल बजाते हैं, और जो लो कास्ट के लोग हैं वो लोग मंदिर के बाहर मृदंग बजाते हैं. तो when I came to ISKCON, तो मैं लोगों को मृदंग बजाते हुए देखता था. I had no problem. मॉडर्न एजुकेशन कॉलेज में पढ़ा, I don't discriminate between caste. बट कहीं तो सबकॉन्शियस में रहता है वो. तो आई टू थिंक ये लोग क्या है, मृदंग बटप बजा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, सब लो क्लास. और बंगाली हमारा स्क्रिप्चर्स भी बंगाली में रहता है, चैतन्य चरितामृत. तो हमारे साउथ इंडिया में ना, उडुपी में बंगाली आर लुक डाउन अपॉन, और बंगाली ब्राह्मण को तो बहुत गाली देते हैं हमारे, और मछली खाने वाले. सो बंगाली से पूरा खुन्नस है हमारे लोगों को, और मृदंग वी कांट स्टैंड, लो कास्ट लोग. पर डांस तो कभी नहीं. मैं ज्वाइन किया है मंदिर, मजे कर रहा हूँ ISKCON में पूरा. 6 महीने बाद घर पे गया था. मेरे पिताजी इज अ स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर, और वो पढ़े लिखे, बहुत बड़े गवर्नमेंट पोस्ट में, और उनको पूरा मध्वा ब्राह्मण है, उनको पूरा मालूम है कि ये बंगाली लोग है, ये ऐसा ऐसा है. तो मुझे बोले तो तुम उधर संस्कृत सीख रहे? तो मैंने स्पॉन्टेनियसली बोल दिया नहीं मैं बंगाली सीख रहा हूँ. मेरे को समझा नहीं, मैंने बंगाली सीखा, क्योंकि चैतन्य चरितामृत के जो वर्सेस हैं इतने मधुर है बंगाली में, जो है ट्रेडिशनल बंगाली में, वो आप सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है वो सामने वाला मुंह में रसगुल्ला रख के सुना रहा है, इतना स्वीट रहता है बंगाली. तो मैं ऐसे बोल दिया बंगाली सीख रहा हूँ. अच्छा. और हमारे यहाँ पे ना उडुपी में कुकिंग का जो सेवा है, कुकिंग इज लाइक एक जो ब्राह्मणों में सबसे लोएस्ट है, वो लोग कुकिंग करते हैं फेस्टिवल्स में, सब अड़िगे बटर बोलते हैं.
तो मेरे पिताजी बोले अच्छा तुम संस्कृत नहीं सीख रहा है? बोला बंगाली सीख रहा हूँ। अच्छा तो फिर क्या सेवा करता है? कुकिंग। मैं कुकिंग बोला तो अच्छा और कुछ आप लोग कीर्तन वीर्तन करते हैं कुछ संगीत? मेरे को मृदंग सीखना है। I want to learn mridanga. I dance in Guru Puja. And then I saw him and then I realized that उनका चेहरा पूरा ना, he was little confused. क्या कर क्या रहा है मेरा बेटा उधर? So the point I'm saying is the experience of bhakti, sankirtan karna, prasad lena, it breaks all religious barriers, all conventions of material logic. मेरे को गौरव प्रभु स्टार्टिंग में वही बोलते थे, I should tell him, I don't like all this dance. मत करो, डांसिंग मत करो, कीर्तन शुरू करो, पीछे खड़े रहो, साइड में खड़े रहो. So I don't know when I went into the kirtan. I don't know when I got addicted to it. मतलब कभी हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये ना सोचो, हो गया. और बहुत सारे devotees का स्टोरी कैसा है? They came to Hare Krishna, they were not really attracted. They were some things they were attracted, maybe prasad. I know one devotee who told me, who tells me always, वो पूरा भक्ति में दिन रात भक्ति करता है. And he used to come for my counseling meetings. He was one of my boys I used to preach to, and I know his entire background. And today I take counseling from him. वो मंदिर में इतना सेवा करता है DTs का, मैं तो वो भगवान को बहुत प्रिय है, तो मैं वो कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं उसके पास जाता हूँ. And बाद में मैंने come back to my room, I think, wow, one time he was looking up to me. प्रभु जी मैं ज्वाइन करूँ क्या? हाँ नहीं, बट उसको इतना मर्सी मिला है, उसको इतना टेस्ट मिला है. नाउ आई फील सो सेफ व्हेन आई एम विद हिम. तो कैसे टेस्ट मिलता है और रिलीज करता है, तो उसको मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे तुम इतना एडवांस डिवोटी है. और उसका हमेशा स्टैंडर्ड लाइन वो मुझे सुनाता है, प्रभु जी मुझे तो भक्ति करना था ही नहीं, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो. अभी मैं फंस गया हूँ, एंड आई एम हैप्पी आई एम फंस गया हूँ, खुश हूँ. कैसे भगवान आपको फंसा देते हैं. आप बस कुछ तो एक पकड़ो जो आपको अच्छा लगता है भक्ति में, और बस देन यू सी हाउ कृष्णा लाइक द मैग्नेट पुल्स यू. वो मेरे को हमेशा बोलता है, प्रभु जी मेरा स्टोरी कैसा मालूम है? कृष्ण के साथ नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे. उसका वैसा स्टोरी है. उसको इंटरेस्ट नहीं था. वो आता था शाम को, कभी घूमते घामते खिचड़ी हलवा खाने आता था, और ऐसा थोड़ा बहुत सेवा करता था. तो थोड़ा बहुत सेवा, थोड़ा खिचड़ी, भगवान ने बोला तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहा है. पकड़ लिया उसको. So this higher taste. So you see what you like in bhakti. Some of you may like to serve prasad. Some of you may like to do management. Some of you may like to do. आपके हर सेवा के लिए यहाँ पे opportunity है. आपको जो भी taste. Some of you may like to do kirtan. Some of you may like cooking. आपके जो भी आपकी desires है ना, जो talent है, उसके लिए यहाँ पे facility है. एक ही talent के लिए facility नहीं है. जैसे मैंने एक बार बोरीवली preaching जब उधर I wanted to do something new. मैंने सबको बुलाया था. I said, what services would you like to do? और सबको मैंने फैसिलिटी दिया था. एक डिवोटी को मैं डिसअपॉइंट किया, क्योंकि उसको जो करना था वो मैंने I couldn't help him. वो आके बोला प्रभु जी मुझे पॉलिटिक्स करना है. और वो जेन्युइनली बोल रहा था, जेन्युइनली, प्रभु जी मेरा क्या बचपन से हम लोग को पूरा फैमिली पॉलिटिक्स में है, तो कुछ पॉलिटिक्स का कुछ है क्या स्कोप? मैं बोला व्हाट डू यू मीन? ही वाज रियली जेन्युइनली सेइंग. मैं फिर ये एक सेवा इधर नहीं कर सकता है. Because why there is bliss in bhakti? Because it is free from politics. It is free from criticism. आप देखोगे हमारे मंदिर में, मैं देखा हूँ 23 साल से रह रहा हूँ, एक बार भी मैंने पॉलिटिक्स नहीं देखा. ऑनेस्टली गलतियां देखा है, मिस्टेक्स करते हुए देखा है, but it is not because of politics. It is because of incompetency, because of lack of competency, not lack of character. So when I tell this to my family, my cousins, विश्वास ही नहीं करते वो लोग. बोलते कैसे हो सकता है यार, हर इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिक्स होता है. आपका मुझे मालूम है, इस्कॉन बैंगलोर, इस्कॉन बॉम्बे, ऐसा है वैसा, और तो सब सही है, बट जो आश्रम में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे एक बार भी नहीं देखो. एवरीबॉडी इज वांटिंग टू डू सेवा. मतलब अंदर से ब्लिस मिलता होगा तभी तो करते रहेंगे. सो भक्ति में कुछ तो है, एंड कृष्णा हैज इन्वेस्टेड हिज पर्सनल एनर्जी इन इट. सो वी रिक्वेस्ट यू आर कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम, जस्ट कैच होल्ड ऑफ समथिंग जो आपको अच्छा लगता है. प्रीचिंग अच्छा लगता है, प्रीचिंग करो. So this higher taste, why this higher taste is important? You may say, I don't want higher taste. Krishna will now reveal in the next verse that why this higher taste is extremely important. Because the next verse will reveal 60. Please chant.
यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः. The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind, even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. See, we need a higher taste because your senses है ना, they are so impetuous. Impetuous मतलब they are so wild. आप बहुत बड़े ज्ञानी रहेंगे तो भी आपके माइंड को पूरा खींच लेगा. So and you will fall down. There are so many well-reputed people in this world. They do good, अच्छे corporate positions में, and I know the many stories. And they do good job from morning till evening. That they do very good things. They take good decisions. But because of decision fatigue, there is a concept called decision fatigue. I read about it. And because of decision fatigue, by the end of the evening, they take such horrible decisions. They betray their own values, and they land up leading a very promiscuous lifestyle. Why it has happened? Because the senses are wild. आपका higher taste है ही नहीं. तो फिर आपने कितना भी ड्यूटी किया, कितना भी अच्छा काम किया, वो सेंसेस विल ड्रैग अस डाउन. इसीलिए आप लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या बोलते हैं? हायर टेस्ट, कुछ हायर टेस्ट दे दो. डू समथिंग विच विल कनेक्ट यू विद कृष्णा. समथिंग येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात्. somehow connect with Krishna. And it is like one family told me, उनका बच्चा था 3 साल का लड़का था. He had this bad habit of putting his thumb in the mouth, sucking his thumb. So his parents and grandparents were tired of removing that habit. वो habit जा ही नहीं रहा था. So then they discovered very nice technique. उसके वो technique करने के बाद उसका आदत छूट गया. So they bought one chaddi for him, which was very loose. तो वो चड्डी पहनता था, वो चड्डी जैसे फिसल जाता था, सब बोलते थे शेम शेम शेम, तो तुरंत चड्डी पकड़ ली. वो दिन भर ऐसे चड्डी पहन के घूमता था, हाथ उसे इधर ही रहता. कभी भी ऐसा जाता था शेम शेम शेम. तो आफ्टर फ्यू वीक्स वो चला गया आदत. तो हमारा क्या सेंसेस और वाइल्ड. तो प्रभुपाद ने चैंटिंग दे दिया, हरे कृष्णा, भागवतम क्लास दे दिया. आप यूट्यूब में जाओ, डेवोटीज को इतना लेक्चर मिलेगा. कीर्तन, इतने सारे डेवोटीज का ग्रुप्स है, बाप रे. जय सच्चिदानंद प्रभु कीर्तन, पुरुषोत्तम प्रभु माधवास रॉक ग्रुप है उनका. फिर हमारे वो माता जी अच्युत गोपी माता जी का कीर्तन है, बीबी गोविंद महाराज का है, माधव प्रभु का है, विश्वाम्बर प्रभु का है. हमारे अंदर वो क्लासेस है. सो मच नेक्टर नेक्टर नेक्टर. दैट इज लाइक चड्डी पकड़ के रखे. वो रहेगा तब तक, तो फिर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाएगा. एंड देन आफ्टर सम टाइम दैट डिजायर विल आल्सो गो. So therefore it is very important because senses are wild. शास्त्र में एक श्लोक आता है, पतंग मातंग कुरंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच एकम प्रमाति कतम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच. पतंगा मतलब बम्बल बी, वो फायर को देखता है, वो लाइट से अट्रैक्ट होता है. आईज गेट अट्रैक्टेड टू द लाइट and gets burnt. Patanga, Matanga, Kuranga, Branga. One is bumblebee. Second is example is given of fish. मीना हता पंचभिरे. उसको टंग से अट्रैक्ट होता है, उसको वम डाल के उसको पुल करते हैं. And deer is attract the hunter plays the music flute play करता है, वो म्यूजिक से अट्रैक्ट होके जाता है and is trapped. पतंगा मातंगा कुरंगा भृंगा. Then one more thing is there. Elephant को क्या करते हैं वो लोग? वो she elephant को लेके आते हैं and the she elephant goes near the male elephant and she just ऐसा छेड़ती है, उसको भाग जाती है. फिर वो एलिफेंट पागल होता है, उसके पीछे पीछे भागता है. वो ऐसा ट्रेनिंग दिया रहता है. और then they made a big pit which covered with grass and that male elephant goes and falls into that. So he is trapped by the touch, sense of touch. A deer is trapped by the sense of ear, and fish is trapped by the sense of taste, and the bumblebee is trapped by the
eyes, and there is musk deer, कस्तूरी मृग, smell. कस्तूरी का जो फ्रेग्रेंस उसके अंदर ही रहता है, वो फ्रेग्रेंस वो ढूंढता रहता है, and that traps him and he dies because of that. So all the senses, तब एकम प्रमाति बोल रहे, एक सेंस इतना पावरफुल है, कतम न हन्यते, देखो एक आइस की वजह से वो फंस गया, डियर कस्तूरी से फंस गया। हम लोग मंदिर में जनार्दन, मैं शालीग्राम पर सेवा करता हूँ, तो हम लोग बहुत सारा थोड़ा सा उपचार होता है, बहुत सारा उपचार होता है, बहुत सारा चीज ऑफर करते हैं, तो बीच में एंड में ड्रेस पहनाने के बाद थोड़ा कस्तूरी भी लगाते हैं। वो कस्तूरी कैसा रहता है, वो एक फोर्क से इतना सा एक बूंद, बस बूंद का दैट्स लाइक अ पाउडर क्रिस्टल रहता है थोड़ा सा, उसको ऐसा वो छोटा सा प्लेट में रहता है, उसको ऐसा हाथ में लेते हैं हम लोग और जनार्दन जी के सर पे मसाज करते हैं अच्छे से, और बाद में वो फिंगर दिन भर फ्रेग्रेंट रहता है। इट इज जस्ट दिस मच, कितना फ्रेग्रेंस उसके अंदर ही है, वो पता ही नहीं उसको। सो हाउ द नोज कैन ट्रैप the ears, eyes, ekam pramati katam nanyate. The last line says, look at all these animals, they were destroyed because they were attracted by one of their senses. But look at the human being, यह सेवते पंचभिरेव पंचा, ये तो पांचों इंद्रियों का सेवा करता है रोज दिन भर, तो उसका क्या हालत होगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी ही कस्तूरी, मतलब वी आर लुकिंग फॉर प्लेजर आउटसाइड ऑफ अस। किधर है, उधर मिलेगा, अच्छा ये गाने में मिलेगा, ये रेस्टोरेंट में मिलेगा, ये एसोसिएशन में मिलेगा, ये रिलेशनशिप में मिलेगा। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी ही कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। हम अपने आप से इतने दूर हो गए हैं, we have become so disconnected from ourselves. So therefore, we need to look at examples around us of those leaders from different fields who are equipoised amidst success, distress, and they are seeking, getting happiness from within. That's why they are able to serve also nicely. उनको गाली गलौज से दुनिया का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग हैं अगर आपके आसपास, then catch them, follow them on Instagram, Twitter, see what they do. It's important. Because then we get inspiration to follow their footsteps and seek happiness within. Otherwise, this world is made in such a way that the best of people, senses are so impetuous, they will drag us away. So therefore, this is a very beautiful verse. और इसमें क्या लिखा है this verse में, if you see this verse, इंद्रियाणि पुरुषस्य विपश्चितः, मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी भी रहेगा जिसको सब पता है गलत है सही है, वो जानते हुए भी गलत करेगा क्योंकि उसको हायर टेस्ट नहीं है। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज से जस्ट नोइंग दिस इज बैड विल नॉट बी सफिशिएंट, यू नीड टू एक्सपीरियंस समथिंग गुड, देन यू कैन गिव अप दिस बैड। अब यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? एक विश्वामित्र मुनि इतने साल से तपस्या कर रहे थे, ठीक है, तो मेनका आई, झुमझुम उसका पायल का आवाज सुना, तो अभी विश्वामित्र मुनि वाज डूइंग मेडिटेशन, ही कुड हैव, उसको तुरंत समझ गया ना, आई एक सुंदरी आ गई है, तो उन्होंने देख लिया उसको, तो he could have thought, अरे मंदिर का कोई घंटी बज रहा है, उसको ऐसे भी सोच सकता था he didn't think it is a temple bell ringing, टंग टंग, उसको लगा, उसको मालूम पड़ गया क्या हो रहा है, because the senses are so powerful. हम लोग एक बार टर्किश एयरलाइंस में जा रहे थे, going to इस्तांबुल, राधा गोपीनाथ प्रभु वर्मा है, तो because we were not sure, मुस्लिम कंट्री है, तो हम लोग वो पहने थे ट्रैक पैंट टी शर्ट ऐसा सब पहने हुए, तो ऐसे बैठे थे, तो एरोस्टेज आई, तो सीधा आके मेरे को पूछती है, सर रम, स्कॉच, विस्की और बियर। तो मैं ऐसे बैठा, तो पहले तो मैं ऐसे देखा, फिर एक्सक्यूज, दोनों को नींद आ रहा था क्योंकि रात को 2 बजे का फ्लाइट था, हम लोग रात भर सोए नहीं, हम लोग रात को 8-9 बजे सोने वाले लोग हैं, तो रात भर सोए नहीं, कोई चेक इन हो गया, ऐसा बैठे उधर, फिर आके 2-2:30 बजे फ्लाइट में बैठा एरोस्टेज, स्कॉच रम विस्की, मैं तो उसको देखते ही रह गया, क्या बोल रही है फिर प्रभु जी को देखा, प्रभु जी को देखा, प्रभु जी देखो क्या पूछ रही है, देन शी टोल्ड हिम आल्सो रम, स्कॉच, बियर, विस्की, बोला हरे कृष्णा नहीं चाहिए जाओ, तो देन शी वेंट, तो मेरे को देख के बोलते हैं, स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह से एक शायरी निकल गया, स्पॉन्टेनियसली, वो मेरे को अभी उनको बोलता हूँ ना, वो बोलते मैंने नहीं बोला, ये मैंने नहीं बोला, वो डिनाई करते हैं, बोले आई ब्रज बिहारी कौन आया पता है, बोला कौन,
आई एक सुंदरी हाथ में लेकर शराब, ये चेहरे की मुस्कान है माया का नकाब। मैंने बोला प्रभु आप क्या शायरी सुना रहे। तो दैट ही कुड से दैट बिकॉज वो अंदर से मस्त है, उनको फर्क नहीं पड़ा। आई फिर उधर रशिया में, तो रशिया इज अ क्रेजी कंट्री, उधर मैं देखा रथ यात्रा में हम लोग कीर्तन, उधर क्या मैन वुमेन का डिस्क्रिमिनेशन मर्यादा नहीं है उधर इतना। तो उधर हम लोग रथ यात्रा में प्रभु जी लीड कर रहे हैं, मैं करताल बजा रहा था, वो जा रहे हैं कीर्तन, सडनली वन लेडी केम राइट नेक्स्ट टू मी एंड स्टार्टेड डांसिंग। एंड देन आई गिव द करताल टू समवन, बट आई सेड व्हाट विल हैपन राधा गोपीनाथ, ही इज सिंगिंग। और उन्होंने माइक किसी को दे दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो पीछे, मैं पीछे खड़ा था, उधर आ गए मेरे पास, मतलब प्रभु आप कैसे आ गए इधर? अरे कम। सो आई हैव सीन पीपल लाइक राधा गोपीनाथ प्रभु, दे आर नॉट अफेक्टेड, दे आर कूल, दे आर कंप्लीटली ब्लिसफुल। Why? Because of a higher taste. You can't artificially do it. 1988 से वो भक्ति कर रहे हैं, खुश है, मजे में। And he tells me all these incidents and stories, and I've traveled with him. It happens because of experiencing something higher, and this experience is coming because of seva. देखो आनंद है ना, आप it can't come by simply knowing that this is bad. Second, it won't come by enjoying spirit. देखो दो चीज very important है. If you want to experience भक्ति का जो नेक्टर आपको चाहिए, तो दो चीज है, एक केवल ज्ञान से नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा देयर हैज टू बी सर्विस, कुछ तो सर्विस मूड होना चाहिए, तभी मिलेगा। कीर्तन में भी आई वांट टू सिंग नाइसली सो दैट आई कैन सर्व द डिवोटीज, वो मूड रहेगा तो ही, बिकॉज हमारा भक्ति का, हमारा जो हम लोग अभी मरने के बाद अगर अच्छा भक्ति किया तो मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएगा आदमी? If you have done bhakti nicely whole life, after death where will you go? कृष्ण की दुनिया में जाएंगे, गोलोक वृंदावन, उधर जाके क्या करेंगे? सेवा करेंगे। इधर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारा गौड़ीय वैष्णवी एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जहां पे किंगडम ऑफ गॉड में जाने के बाद सेवा, तो इधर सेवा में मजा लो, तो उधर भी हमको सेवा ही करना है, बाकी धर्म में अलग है। इन आवर स्क्रिप्चर्स किंगडम ऑफ गॉड जाने के बाद सेवा, तो इधर सेवा में मेवा लो, enjoy the seva here, then you will be qualified to go there. So, but the point is, all religions are talking about enjoyment when you go to kingdom of God. हमारा है सर्विस, तो यहाँ पे सर्विस करो, क्योंकि सर्विस से जो सेंसेस जो impetuous है, they will be curbed. And Krishna is telling here that vipaschita, बुद्धिमान व्यक्ति का भी दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे एक शास्त्र में एक स्टोरी आता है, I'll end with this story, then we can do kirtan. So once इथोपिया में स्टोरी आता है कि बर्ड्स ने कॉन्फ्रेंस किया, बोला हम लोगों को शिकारी आके फंसाएगा, तो मैं आपको एक मंत्र सिखाता हूँ, ध्यान से इसका जप करो और उसको हमेशा रिमेंबर करो। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, भूल से इसमें फंसना नहीं। रिपीट करो, सबको रिपीट करा है, सब समझ गए, याद रखना, तो दे ऑल रिमेंबर्ड। बाद में शिकारी आया, उसने दाना डाला, एंड ऑल द बर्ड्स वर टेकिंग दैट दाना एंड दे वर आल्सो चैंटिंग दिस मंत्र। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाल बिछाएगा, भूल से इसमें फंसना नहीं, एंड द शिकारी took all the birds away, and as they were going, they were chanting this mantra. So this story is spoken in the scriptures to say how, despite knowing everything, we will be dragged. This is how powerful material energy is, and we can't underestimate this. So now we'll end with this shloka where Krishna will contrast this kind of struggle with the simplicity and easiness with which a devotee remains away from sensual enjoyment. That is number 61. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. So, yukta asita mat para, मेरे ऊपर फोकस करो। Krishna is saying, remember me.
So, otherwise the senses are so impetuous, they will drag away. So Krishna is saying, Yukta asita mat para, mere upar karoge, then that man will be having steady intelligence. That person will have steady intelligence. So in bhakti, Krishna is derived from the Karshan. आपने देखा है वो कर्षण केंद्र ट्रेन में जाते समय रहता है. Karshati मतलब attraction. Krishna means all attractive. In fact, the Greek word Jesus Christ is derived from the Greek word Krishta. Krishta is coming from Krishna. Krishna means all attractive. अगर आप कृष्ण के आसपास कहीं गए, Krishna is attractive. If you hear about Krishna's pastimes, Krishna's playing flute, Krishna's dealing with his gopi friends, his boyfriends, Krishna's mother Yashoda and Krishna's pastimes, ये जब हम सुनते हैं, Krishna attracts our heart. So then what happens? Yukta asita mat para. Then we will have higher taste. Then we will be able to say no to sense gratification. So this is the section. Now, today we will not discuss this. If somebody doesn't get attached to Krishna, if somebody doesn't put his mind on Krishna, if they don't engage in Krishna's service, then what will happen? Krishna will systematically explain how the mind will, systematically now Krishna will explain in 62 and 63, which we will take up next time, how slowly and systematically mind will drag you down. How it happens. First step, second step, third step. So for that, either you wait till the next class or you go back home and read the Bhagavad Gita, second chapter, 62 and 63 verse onwards. You will get to know. So I will stop here right now. If there is anybody has any questions or comments, we can take. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you, Prabhu. Sometimes they get the taste and they fall down. And again, when they come back, means they pray to Krishna and hunger for that again to come back. But also, when Mahaprabhu say that when devotee follow Mahaprabhu actually hold the person of Shikha and he gets it, never allows him to go out of the book. So I just wanted to understand this. How can we understand this? Like Mahaprabhu is saying, will never leave a devotee, and at the same time, when your devotees have this fallen and they are coming, then you can go again getting the Krishna. Lord never leaves a devotee means this. Just want to say something more. That desire that the devotee has, or that frustration he experiences in sense gratification, that is the Lord not leaving the devotee only. If the Lord had really left the devotee would have enjoyed sense gratification. The fact that he finds it distasteful means the Lord has not given up. You understand? That is the Lord's special mercy, ना कि वो उसको बात frustrate कर दिया. But coming back to getting the same place again. It's difficult. That's why we tell devotees don't flirt with material energy. Don't think that अरे वापस आ जाएंगे ना भगवान है ऐसा बोलेंगे तो फिर भगवान लंबा समय तक रखेंगे बाहर. That is an offense to the holy names and to commit sinful activities on the strength of the holy names. See, accidental fall down is okay, but navai jano jatu kathanchana vrajen mukunda sevannavadanga samshritam smaran mukundangripagohanam punar vihatumiche narasagraho jana. The Bhagavatam, Narad Muni is saying this verse that Navai Jano Jatu Katanchana. If somebody has sincerely served Krishna once, Mukunda Sevannavadanga Samshritim. If somebody has given up sense gratification and served Mukunda once, sincerely, what will happen is, then when he gives up Krishna, Smaran Mukunda Angriupagohanam Punar, वो उसको स्मरण आता रहेगा यार मैं भक्तों के साथ था क्या किया मैंने क्यों किया स्मरण मुकुंदांग्री उपगोहनम पुनः उसको किस्सा रहेगा लास्ट लाइन नारद मुनि सेज विहातुमिच्छे नरसग्रहो जना. अरे एक बार किसी ने कृष्ण को पकड़ा तो कृष्ण उसको नहीं छोड़ते. न रसग्रहो जना, उसको एक बार रस लग गया टेस्ट लग गया
then Krishna will not live. How Krishna gets back the devotee is different for different person. Somebody has to go through a lot of suffering before he comes back. Somebody has to go through infamy, but he comes back. Somebody goes through diseases. Well, how Krishna gets you back, that is different. But Krishna gets you back. So, Krishna kahe ama baje mage vishaya sukh, amrit chadi vishaya mage yehi bada murkh. Chaitanya Mahaprabhu के वर्ष में कविराज गोस्वामी says, Krishna is saying, कृष्ण कहे आमा भजे, अरे मेरा भक्ति कर रहा है. कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, मेरा भक्ति भी कर रहा है और सेंस ग्रेटिफिकेशन भी चाहता है. कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मागे यही बड़ा मूर्ख. अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं. But the next line. The next line is much better than this one. Krishna says, "Chadi vishaya mage yehi bada मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय केने दीवा." भगवान बोल रहे हैं, आमी विज्ञ, मैं बुद्धिमान हूं, यही मूर्ख, ये मूर्ख है, विषय केने दीवा, मैं क्यों दूं इसको मजा, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन का, है ना. तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय केने दीवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाएगा. मैं उसको मेरा चरणामृत दे दूंगा जिससे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन भूल जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. बहुत दिनों बाद इसको भी याद आया. कृष्ण के आमा बजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्ख विषय केने दीवा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाएगा. So this is the Lord's special mercy that He makes us miserable in sense gratification. So therefore, that is Krishna's protection. One reason why we keep Shika is, we are having hope that Krishna will drag us by the Shika. Chule Dariyane. That also 2 verses I forget. You may remember. वापस बोलो फर्स्ट लाइन. दुर्दैव, उसके पहला वाला स्ट्रक वाला, दुर्दैव सेवक यदि जाए यदि अन्य स्थाने, से ठाकुर भाल तारे छूले दरियाने. दुर्दैव वश भक्त यदि जाए अन्य स्थाने, दुर्दैव वश कहीं भक्त चला गया, मेरा ठाकुर इतना अच्छा है, दुर्दैव वश भक्त यदि जाए अन्य स्थाने, से ठाकुर भालो तारे छूले दरियाने. उसका छिका पकड़ के उसको खींच के लेके आएंगे. उसका फर्स्ट वाला भी श्लोक अच्छा है, देखो याद आएगा. So basically the point is, bhakti yoga is a very beautiful process where our Krishna is so loving. See, in other religions you are condemned for eternal. आप मतलब सोचो, खबर में पड़ा है वो आदमी 1500 साल से, उसको जाना है किंगडम ऑफ गॉड एंजॉय करने के लिए. मतलब कितना खतरनाक. और हमारा उसने अगर उसने भक्ति नहीं किया उसके हिसाब से, तो मरने के बाद वो मतलब जजमेंट के डे के दिन वो नरक जाएगा, हमेशा के लिए नरक में रहेगा, हमेशा के लिए. हमारे भगवान इतने अच्छे हैं कि वो अंदर परमात्मा के रूप में है. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो. आपको गलत काम भी करना है तो आपके साथ आएंगे वो. He will see that you are experiencing the suffering and He will be with you till you come back to Him. He will not leave you. He is not a God of judgment. See, I'll tell you, our relationship में, you are attracted to another person only if he accepts you without judging you. You want a relationship where you are not judged. हर एक व्यक्ति सोचता है यार मुझे जज मत करो यार, मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करो, ऐसे हम बोलते हैं ना. तो कृष्ण देखो कितने अच्छे हैं. He doesn't judge us. He is there with us. तुम सबसे गंदा काम भी किया, आपके साथ साथ चलेंगे, अलग अलग योनि में चलेंगे. And He is waiting. The Kathopanishad says that Krishna is waiting to see when will you turn to Him. There are 2 birds on the same branch of a tree. One is enjoying fruits, bitter fruits, sometimes sweet fruits, sometimes suffering, sometimes enjoying. The other fruit is watching. Paramatma, Shant, is waiting. When will He turn to me and understand that ऐसा बेकार है? तो आपने पता नहीं कितने जन्मों तक भक्ति किया, सफरिंग किया. Then somehow Krishna arranged you to come to a ISKCON lecture, Krishna conscious lecture, so that thing is awakened in you and you turn back to Krishna. Krishna,
अगर आपने कोई लास्ट लाइफ में गलत गड़बड़ भी किया होता है या आपने कुछ पाप कर्म किया है अभी लास्ट ईयर तक फॉर एग्जांपल, इन सम अदर रिलीजन्स यू आर एटर्नली कंडेम्ड, मतलब यू विल गो टू हेल फॉर एवर। अरे ऐसे नहीं है भगवान, ऐसे नहीं हो सकते भगवान। कृष्णा इज वेरी काइंड, यू नॉट एटर्नली डैम। वो चंगेज खान सुना है? चंगेज खान, तैमूर का वो कॉफिन जो था, विकिपीडिया में आपको डिटेल में मिलेगा स्टोरी। उसने मरने के बाद उसने बोला था कि मैं मरने के बाद मेरे कब्र के ऊपर रखने का, जो भी मेरा कब्र उठाएगा उस दिन दहशत मचेगा पूरी दुनिया में, ऐसा उसने लिखा है। डोंट डेयर टू ओपन माय कॉफिन, देयर विल बी डिजास्टर एंड आई विल कम बैक एंड डिस्ट्रॉय, ऐसा करके उसने लिखवा के वो मरा। और वो 1200 साल तक ऐसे ही पड़ा था उसका कब्र। बीच में रशिया के साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे 1930s में 40s में कि वो चंगेज खान, तैमूर, वो लोगों का मतलब, बिकॉज ही इज फ्रॉम दैट एरिया ना, कजाकिस्तान वो एरिया के, उज्बेकिस्तान एरिया को, वो लोग सब वो आर्कियोलॉजिस्ट सब स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करते करते उसका कब्र उठाया और ये देखा अंदर ये लिखा था, वो डर गए। और आप विश्वास नहीं करोगे, अगले दिन ऑपरेशन बार्बारोसा शुरू हुआ। ऑपरेशन बार्बारोसा इज द मोस्ट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं, द वर्स्ट बैटल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ऑपरेशन बार्बारोसा, जब हिटलर ने 30 लाख सैनिकों को लेके रशिया में इन्वेड किया। और वो जो 2 साल में जो पागलपन हुआ, मॉस्को को चारों तरफ से घेर लिया, फिर कैसे लोग इस तरह से मरने लगे मॉस्को में, वो घोड़े को खाने लगे, फिर साबुन खाने लगे, फिर एक दूसरे को खाने लगे, कैनिबल्स बन गए। और ऐसा भयंकर, एंड देन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस साइंटिस्ट रियलाइज कि कहीं उसका कर्ज तो नहीं है, क्योंकि द वेरी नेक्स्ट डे दिस ऑपरेशन दे वेंट बैक and they closed the coffin, and then after 2-3 days Hitler's army was had to retreat and they got defeated. So you can imagine the energy. See, this may be superstitious, but I'm talking about the energy of hatred, anger, killing. Religion is not like this. God is not somebody who will want you to eternally be in the, I'm just thinking Aurangzeb and these kind of tyrants, वो लोग अभी तक कब्र में पड़े यार, कब जाएंगे जन्नत? मतलब क्या लाइफ है, मतलब क्या डेथ में भी सफरिंग। इनफैक्ट औरंगजेब व्हेन ही वाज डाइंग आफ्टर फॉर 40 years he tried to invade साउथ में आ ही नहीं पाया, वो औरंगाबाद में उसको रोक लिया ना, बड़ा स्टोरी, मस्ट बी नोइंग हिस्ट्री। तो एंड में उसका जो थर्ड बेटा था आजम, उसके गोद में मरा हो, एंड जस्ट बिफोर, एंड औरंगजेब अकॉर्डिंग टू, मैंने आर यू कनेक्टेड बुक में पूरा डिटेल में दिया है, औरंगजेब अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन हिस्टोरियंस दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, richest man in the world. When Shivaji was there during 1670s, 1680s, he was the richest man in the world. And because of this war against the Marathas, उसका ट्रेजरी पूरा खत्म हो गया। और अभी उसका जो डिसेंडेंट है, बहादुर शाह जफर के जो डिसेंडेंट है, दिल्ली के स्लम में रहते हैं, अभी उनका पूरा स्टोरी आया। तो काल का प्रभाव देखो। और जब औरंगजेब मर रहा था, आजम के उसके बेटे के गोद में मरा, मरते समय उसने स्टेटमेंट बोला विच इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री, मैंने क्या किया जिंदगी में, मैंने ये सब क्यों किया, मैं कौन हूं, मैं कहां जाने वाला। So yes, so this is all ultimately all your ambitions, imperial ambitions of killing and thinking it is for God, all that is crazy. God is not like that. God is very loving. आप छोड़ भी देंगे, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके पीछे पीछे आएंगे। तू जहां जहां चलेगा तेरा साया, दैट साया इज कृष्णा, साथ होगा, ऐसे कुछ है ना गाना, हाँ, मेरा साया साथ होगा। कृष्णा विल नेवर लीव। Does that answer your question? Anything else? We'll stop. It's 8:30. We'll have one short Narsimha Aarti.